May I come in, sir? Come, Shivani. What your father does? So my father is no more. Okay. So you should have written over here, na? Come, sit. I'm so sorry. Okay. So Thank you, sir. your mother is doing something? No, sir, she is homemaker. Okay. You did your graduation from BHU, right? Yes, sir. And after graduation, like there is a gap of nearly 6 years. Have you done something in between? So I'm working as block welfare officer under SC/ST welfare department Okay. through 67 BPSC. I'm posted in Rohtas currently. Okay. Can you get one A4 sheet? एक नहीं 4-5 दे दीजिए मुझे. Thank you. शिवानी, बहुत ही ओपन कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? Right now you are working as what? Block welfare officer, SC/ST welfare department. Okay. Being a block welfare officer of the SC/ST, what problems you are encountering right now? Sir, there are many challenges that I'm facing, like all other BWOs are facing challenges. So first of them is awareness deficit Okay. among people of scheduled caste, scheduled tribal Okay. communities. Okay. Then there is the problem of migration, because most of the families, like the earning member has migrated, so there is the problem of documentation. Okay. So then there is the problem of infrastructure, I think, Okay. at block level. Okay. So 3 major challenges you are facing. So one more is digital divide. Digital divide. Can you please quote any data on digital divide? Do you know? Do you have any idea कि क्या digital divide अभी इंडिया में है as of now? So I'm not able to recall, but I have read about it. Okay. First problem is awareness. Being a block welfare officer, what exactly you did in order to make SC and ST aware of their rights, aware of the various schemes which government is running? So we have Vikas Mitra at Panchayat level. So I have like asked my Vikas Mitra to visit. So actually this is the like. So may I speak in Hindi? Yeah, you can. सर ये हमारे डिपार्टमेंट का भी है कि जो भी विकास मित्र है, इनका जो नाम है वो हर जगह लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि उनके जो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके थ्रू उन्हें सारी योजनाओं की जानकारी मिल सके. प्लस सर विकास मित्र जो है वो हर टोला में घूमते हैं, और सर प्लस हम लोगों को भी वीकली विजिट महादलित टोला या फिर जो भी अनुसूचित जाति का टोला है वहाँ करना होता है. Okay. So tell me one thing related to this. What are the constitutional articles that provide protection to SC and STs? Sir, there are many constitutional articles. So first of them is Article 46 under DPSP. Okay. Which is for the state has the duty to promote economic and educational interest of scheduled caste and scheduled tribes, Okay. along with other weaker sections. Okay. Then sir, then we have Article 17, which prohibits untouchability. Okay. Then we have reservation policy for under Article 15(4) and 15(4) for education, and the 16(4) is for employment related reservation. Then sir, there is provision for reservation of seats in parliament and state legislative assemblies too. Okay. Now, can you please tell me one thing? What is Article 341? So may I make a guess? Yes, go ahead. So I think so Article 341 have the list of official list of scheduled caste. How does it done? It's notified by President of India. Okay. What is the role of a state government into it? So state government prepares the list and make a proposal. Sir. Okay. So I'm just like not able to recall it properly. Okay. Have you heard of Devinder Singh versus the state of Punjab case? Yes sir. What it is? सभी पढ़ा था. Huh? Sir, yeah. So
I just forgot it. So, do you think a state government, do they have power to subcategorize SC? Yes, it's yes, it. They have power to subcategorize SCs? So they have the power, and the judgment was passed by Supreme Court under this case, the Vinder Singh case. Okay. Judgment was passed. So, does subcategorization mean tinkering with Article 341? So Article 341 has the official list, Okay. and it will let, maybe it will let like there will be subcategorization of the already existing scheduled caste list in the article. Okay. Basically, you mean to say कि subcategorization, it is not allowing the state to add anyone to the Article 341 में जो list बना हुआ है, only those would be there. उसी list में within that list state can do subcategorization. So it does not amount to tinkering with Article 341. Yes, sir. Okay. Good. Very nice. चलो अब एक बात बताओ शिवानी, you have done your graduation from BHU in geography, right? Yes, sir. What is the significance of geography in international relations? Sir, geography is a very important part of geopolitics, because whatever is going in international level, it's directly or indirectly influenced by geography. For example, resource allocation, critical minerals, oil and petroleum reserves, then border regions. So conflicts भी सर अभी geography से governed है. Okay, have you heard of the Great Game? What is the Great Game being played? No, sir. Sir. No? No, sir. No idea. Okay, कोई नहीं. एक बात बताओ, why United States of America is too much interested in acquiring Greenland? Sir, Greenland has its strategic location in Arctic. So, and as the glaciers are melting, it will provide an alternate route. Okay. Uh, Any other reason? Sir, there is the presence of critical minerals in Greenland. Okay. So why critical minerals have become so important nowadays? Why America wants to diversify the source of critical minerals? So, because critical minerals are quite important in the development of modern technologies like Okay. semiconductor, artificial intelligence, Internet of devices, then defense technologies. Okay. So that is why. What is weaponization of supply chain? So, when a country tries to control over the major critical minerals and its supply chain and its supply or trade, then it's called पक्का weaponization of supply chain. पक्का सोच लो. Some Have you brought any book or anything? no, sir. Write down. जो चीज नहीं समझ में आ रही है लिखिए आगे आप. सब मैं borrow pen. Thanks. What is your take on corruption prevailing in judiciary, higher judiciary? Sorry, sir. What is your take on corruption prevailing in higher judiciary, specifically Supreme Court or High Court? So I'm not able to recall any data or report on this. Not reading newspaper? So I'm reading newspaper. So there have been cases in recent times, like Justice Verma case. Okay. So what was that case? So it was related to corruption charges on Justice Verma, Okay. where lots of burnt notes were found around his, like, at his home. Okay. So what should be done to weed out such people from the system? Sir, I think there should be proper vigilance committee for this, Okay. for on the legal side, and then on the ethical side, sir, I think there should be some sensitization programs for it. Sensitization program, what does it mean? Sir, so that sensitization programs to make them ethically, to make them act ethically. Okay. So tell me one thing.
in case if any judges or judge has been accused of say taking bribe, what are the remedies available, how he can be removed from his office? Can you please explain the whole process? So the judge can be removed from his office on two bases, that is misbehavior and proved incapacity. Okay, proved misbehavior and incapacity, go ahead. Yes. हाँ, proved misbehavior and then if there is charges of corruption, then it will come under proved misbehavior. So Okay. for this, we have Article 124. Okay. For this, motion is passed in Rajya Sabha or either of the houses, Rajya Sabha or Lok Sabha. In Lok Sabha, the motion should be passed, signed by 100 members, and in Rajya Sabha, it needs 50 members. Okay. Then it goes to the speaker, and if he approves of it, he or she approves of it, then inquiry committee is formed. And if inquiry committee, Who are the part of that inquiry committee? so there are three members, Chief Justice of India, and two other members that I'm not able to recall. Okay, okay, go ahead. And if the inquiry committee approves of it, so there is the bill comes back to the houses of parliament, and Bill? it is sorry sir, the motion that Yes, has been passed. for removal. And it is done by special majority in both the houses. Okay. And then the president's consent, like president's approval, Okay. is important. Tell me one thing. USA has decided to exit from UNFCCC. What would be the impact of it on climate governance? Sir, it first of all, it will lead to create problems in global climate governance, because USA provides data to UNFCCC about its pollution and greenhouse gases. Okay. So there will be unavailability of data. So it will lead to, like, it will prevent making of policies. Okay. Then there is a problem of financial problem. There will be financial problem also, because USA provides financial and technological help Okay. to UNFCCC. Okay. So these problems will be there. And what about the commitment? What about the net zero commitment which we already have? Or what about the net zero commitment of developed country? What about the carbon space? What would happen to carbon space? Sir, obviously it will be like sir, because environment से किसी एक का नहीं है, वो पूरे और उसके लिए भले ही हम लॉज बना लें, लेकिन जो उसको सर हम लोग लॉज में फिर भी ट्रैप नहीं कर सकते. तो अगर एक कंट्री पूरी तरह से अलग हो जाए तो सर पॉलिसीज पे अफेक्ट पड़ेगा ही, प्लस सर इससे जो पॉलिसीज बनेंगी उनसे काफ़ी ज़्यादा उनका सर एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, ये और अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे. लिखिए यूएनएफसीसी, यूएस एग्जिट फ्रॉम यूएनएफसीसी. टेल मी समथिंग अबाउट बीएचयू. अभी रिसेंटली डे बिफोर yesterday there was a news related to redevelopment of Manikarnika Ghat in Varanasi. What was the news? Sir, there is a project by the UP government for the redevelopment of renovation of Manikarnika Ghat under Okay. its beautification project. Okay. So it will help and assist in proper performance of the rides there, and basic amenities will be provided for that. Sir, but according to me, I think there is a need of maintaining a balance between the historic, because Manikarnika is very historic. Okay. So whatever renovation is being taken, happening there, it should be in balance with the spiritual. हिंदी में ये गो हेड बताओ, जैसे बताना है बोलो. सर जैसे वहाँ पे ये है, जैसे सर अभी जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट है उसको मॉडर्नाइज करने का, तो इसमें भी ज़रूरत है कि उसको बैलेंस किया जाए, जो भी इसका स्पिरिचुअल लेगेसी है उसके साथ. ओके ओके, टेल मी समथिंग अबाउट बीएचयू. Sir, BHU was formed in 1916 and its founder was Madan Mohan Malviya.
currently it offers very diversified and secular courses Okay. from philosophy to engineering. Why the term Hindu into it? Banaras Hindu University. There is not any other university that is having Hindu as one of the part of the name. Why Hindu over here? Sir, may I make a guess? Yes. So because I think its founder was Madan Mohan Malviya, and he was kind of inclined towards um religious institutions. Okay. So but इसका जो इसके नाम में जो हिंदू है, it does not interfere with its secular part, like it is a secular university. Okay. Tell me one thing. Contribution of Madan Mohan Malviya. Uh, Sir Madan Mohan Malviya has been very active freedom fighter. First of all, he has established Banaras Hind University, which has itself acted as a platform for education Okay. at the time when it was most needed in our country. Okay. Anything else? Then he has formed some. Then he has led one movement that I'm not able to recall it. चौरी चौरा इंसिडेंट में कुछ उनका रहा था रोल? डू यू रिमेम्बर? No sir. नो आइडिया. No sir. Who fought the case for Chauri Chaura accused people? Madan Mohan Malviya. He was one of the advocate. ठीक है, बहुत बड़ा contribution है. ठीक है. Yes. Now let me see. We were talking about critical minerals, right? So you said because we require supply chain, diversification. That is why we need to have this critical what you call. We need to ensure critical supply of critical minerals. Supply of critical minerals. Can you please tell me about Pax Silica? What is Pax Silica? Pax Silica is US-led initiative, which is centered around artificial intelligence, semiconductor, and other modern technologies. Okay. Anything And else? so, Is India part of it? India has been recently invited to join it. Okay. Who are the members of Pax Silica? So I don't recall the name of Right down. What is the concept of G2? शिवानी, G2 का क्या concept है? sorry sir. No idea. Write down. How G2 is different from Quad? ये भी पता होना चाहिए. G2 versus Quad. ठीक है? Yes sir. Coming to next. Yes. Coming to अभी एक नेचुरल डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 200 पे. Tell me something about Article 200. Why it has been in news recently, and why there was controversy associated with Article 200? So recently this article has been used because a judgment has been passed by Supreme Court regarding this. That is, Article 200 is for like whenever bill arrives to governor, Okay. the governor has to give assent to the bill, either withhold the bill or pass on to the president for consideration. Okay. So, but there is no time limit within which the bill will be returned to the Lok Sabha or Rajya Sabha. However, now Supreme Court has passed a judgment that the bill should be returned within a proper time scale. Okay. The bill should be written as soon as possible. However, Supreme Court has not given any timeline for this. Timelines has been given. Okay. So, ठीक है. In that case, state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu case. After that, what exactly happened? President sent an President asked for advisory opinion of Supreme Court on similar issue, specifically on Article 200. In that advisory opinion, Supreme Court stated that timelines cannot be imposed on governor or the president because that has been given by the constitution itself, as soon as possible, the operative form. But at the same time, they also have to ensure that they must follow due process of law. ठीक है. तो अभी क्या as of now which one is in effect? Advisory opinion of Supreme Court or a state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu?
So state of Tamil Nadu versus state of governor. Sorry, Governor of governor Tamil of Nadu. Tamil Nadu. Why not advisory opinion of Supreme Court? So because it is advice, it is just an advisory opinion. So, So I think state of Tamil Nadu, like Tamil, that judgment prevails over it. why? So because वो advisory jurisdiction है, वो Okay. advice है और यहाँ पे सर एक judgment pass हो रहा है. So, in case if government wants to get this judgment overturned, what government can do? So government can form a law for this. Okay. However, the law can be debatable. So I'm not able to recall this. Okay. Can government go for review of this particular judgment using the recent advice given by Supreme Court? So it can be done by another bench of Supreme Court, Okay. which should be larger than the previous bench. Okay. What is the strength of advisory opinion? Whenever president asks for advice of the Supreme Court, so what is the minimum number of judges that should preside to decide on that case? Sorry, sir. No idea. No, sir. Okay. याद रखेंगे. Minimum 5 numbers of judges should be there. Section 5 judges. Advisory में ठीक है. Yes, sir. Coming to next. Tell me one thing. Do you support? अब कुछ situation based question पूछते हैं. सबसे पहले आगे अभी वो हटाओ. You are right now block welfare officer. Why do you want to become say BAS? Sir, Is this that one is your first choice, no? yes, sir. Second one is Second one is Bihar Education Service. okay. Third, So third is sub registrar. fourth, So fourth so भूल गए. okay. कोई नहीं चलो ठीक है. Go ahead. Sir, as a block welfare officer, I have got proper exposure to the ground challenges, and it has helped me learn about how the welfare schemes can be implemented. Okay. However, I want to join higher services like BAS because it will help me enlarge my administrative capacity to work for those like the most marginalized community along with other diversified works. Okay. So because there has been lots of ground challenges that can be managed at a higher level, I think so. I've said there is no I want to join higher services not for the change in purpose. It's just I want to make a bigger impact. Okay. So you means through BAS you want to make a bigger impact than BWO. Okay. Tell me one thing. Why, when it comes to the order of preference, you have kept Bihar Education Service at the second position while there is no DSP post? Why not DSP over? Means in general, when you would look at the propatra of most of the candidate, you would find BAS and then BPS. Why not BPS? Why BES? So I have not kept BPS in my preference. Why? So because I'm more inclined towards civil side, not police. Okay, so being a BAS, being an administrative officer, you will have to deal with law and order situation also. Yes, So sir. how would you manage then there? So as BWO, we also I get the chance of maintaining law and order. Okay. But sir, it is quite different in case of Bihar Police Service. Okay. Why BS? Sorry. Wait करो, मैं लास्ट में दूंगा feedback. Don't worry. Go ahead. Why BS? So BS stands for Bihar Administrative Service and No, BES. BES. Yes. So because education has been a major challenge in Bihar, so as being a part of Bihar Education Service, it will let me apply my ideas and work for education in Bihar. What are your ideas? Sir, there should be. I think, sir, I have some of the ideas, which are like there should be proper education at primary level, for which we have government schools. But I think at government school, apart from the regular courses, there should be some extracurricular activities. Okay. Also. And sir, then there is lack of there is limited higher education in Bihar.
institutions related to higher education. I'm coming to that. Tell me, what is the new features? What are the new features of NEP? Like you are saying that I'll introduce some of the core circular activity. Are core circular activities not part of NEP? So it is part So of it. what innovative ideas are you having? सर इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना? पता नहीं। That's a gap. Yes, sir. ठीक है. Coming to next, मैं आऊंगा अभी और बताऊंगा. वेट करो तुम. Tell me something about caste census. Do you support caste census? सर कास्ट सेंसस अभी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइक द ग्राउंड प्रॉब्लम्स Okay. अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो उनमें डेवलपमेंट का लेवल भी काफ़ी अलग अलग है। तो उससे सर इक्विटी फॉर अप्लाइंग इक्विटेबल इंक्लूसिविटी, इन सब के लिए सर कास्ट सेंसस इम्पॉर्टेंट है। So, but the caste, don't you think it is going to create more caste consciousness? It is going to create more caste division within the society? सर इससे ऑब्वियसली इससे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि कास्ट सेंसस का यूज़ हम लोग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट पर्पस से यूज़ करें। इसके लिए सर सोशल लेवल लाइक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत है सर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इसका यूज़ सर मेनली गवर्नमेंट पर्पस के लिए करें। No, but that data would be open for interpretation by political parties too. That data would be open to interpretation by the common public too. What you would do then? Because certainly it is going to create caste division. It may even many of the OBCs group SC ST they may ask Supreme Court to increase the means what you call remove this 50% cap and increase the reservation to say 70%, 80% like this. Then what you would do? सर कास्ट सेंसस जो है ये सिर्फ सोशल लाइक लोगों के बीच में सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना है, Okay. प्लस इकोनॉमिक सर आई थिंक सेकेंडरी हो जाता है कास्ट का जब वो आता है तो। Okay. Go ahead. सॉरी सर, सवाल क्या था, भूल गए। सवाल ये था कि आप बोल रही हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए, बट जब ये कास्ट आइडेंटिटी को फ्यूल करेगा, बहुत सारे ओबीसी बेस्ड पार्टी जो हैं, बहुत सारी और भी पार्टीज हैं, दे वुड डिमांड कि रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए 50 to 70%, 80%. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर कास्ट टेंशंस इन द सोसाइटी. सो हाउ वुड यू टैकल द फॉल आउट ऑफ द कास्ट सेंसस? सर अभी जैसे बिहार में कास्ट सेंसस 2023 में हुआ था। ओके. सर 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ मेजर लेवल पे ऐसा कुछ नहीं दिखा है क्योंकि लोग भी सेंसिटाइज हो रहे हैं। तो वो रिपोर्ट ओपन डोमेन में है, अवेलेबल पब्लिक डोमेन में? कास्ट का सर डेटा तो कास्ट सेंसस का डेटा मैक्रो लेवल वाला डेटा तो सर अभी क्या है मैक्रो लेवल का डेटा? कैन यू प्लीज टेल मी, क्या ओबीसी का परसेंटेज है, एससी का क्या परसेंटेज है? सर ओबीसी एससी का तो मुझे नहीं आता है, लेकिन सिर्फ मेनली जो कास्ट है उसमें यादव, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यादव का है। ओके. उसके बाद मुसहर जाति का है। तो ये तो पहले से ही पता था, अभी कास्ट सेंसस से क्या डिफरेंट हुआ? सर ये शायद पहले से नहीं था ना। ये तो पहले से भी सबको पता है कि बिहार में यादव की संख्या ज्यादा है. सर इससे सर आई थिंक दैट वाज एस्टिमेटेड। ओके. हाँ सर, अभी सर आफ्टर कास्ट सेंसस ये प्रॉपर डेटा है। इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन? नो सर, इट्स नॉट, अभी तो नहीं अवेलेबल है। तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सर मैंने ये कहीं पढ़ा था। ओके ओके ओके. Yes. Migration is a major issue for you, right? Yes, sir. You find it like quite it's for you being a block welfare officer, you find this quite challenging, right? Yes, sir. Why migration is a cause of concern for you? सर बिकॉज माइग्रेशन से सर एक चीज़ तो है कि लोग जब बाहर चले जाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब लोग यहीं पे जॉब करेंगे अपने लोकल जहाँ के हैं वो,
तो सर उससे पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है. Okay. तो इट विल हेल्प इफ दे आर वर्किंग हियर, इट विल हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट. प्लस सर डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सर डॉक्यूमेंटेशन तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. प्लस सर यहाँ पे जब मेनली सर मेल मेंबर्स माइग्रेट करते हैं तो उनकी फैमिलीज़ यहाँ रह जाती हैं, तो बच्चों का सर अगर देखा जाए तो सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि दे ग्रो विदाउट देयर पेरेंट्स. Okay. So that is your concern. सो आई थिंक इससे रीजनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट. Most of the industrialists who are currently like billionaires of India, they have migrated from certain places. सर दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे आर They became industrialists after migrating to some new places. They started new business. They got new opportunities. So don't you think migration this also contribute positively to the economy? so migration contribute to economy, but I think if they get to work at their home, like hometown, it will help in the regional development. It will have impact on the nearby areas also. Okay, so you mean to say कि if they would be working in their home state, then also they could have become Tata, they could have become Ambanis? Only if government has provided them proper opportunities, and if they get proper education and skills. So what about the locational advantage which they get when they shift to, say, Bangalore, when they shift to Surat? Why most of the diamond industries are located in Surat then? Suppose you want to become a diamond merchant, can you become that much successful by staying in Patna than those who are already there in Surat? Sir, that's my personal choice to become a diamond merchant. Okay. So because but in Bihar most of the migrants are labored. They are in search of any kind of labor related work there. Okay, okay, सर okay. तो उनके पास ये चॉइस नहीं है कि उन्हें डायमंड मर्चेंट बनना है, या तो सर अगर जॉब ही चाहिए तो यहाँ पे लोकल लेवल पे प्रोवाइड किया जाए. अगर वो छोटा सा फैक्ट्री भी खोल लेते हैं सर, तो उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू सर जैसे ग्रोथ पोल का जो कॉन्सेप्ट है उससे पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है. Okay, 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 nice, nice. Do you find geographical, isolation, or can you say कि it's because it's a landlocked state that is also responsible behind the backwardness of Bihar? Yes sir, it is at a level, at an extent it is a Okay, reason. okay. Tell me one thing. Do you think Bihar should be given a special category status just because of the backwardness which Bihar is having right now? सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं What are the parameters? as far as I can recall there are 5 parameters. Okay. इसमें एक है डिफिकल्ट एंड हिली टेरेन, जो Okay. कि बिहार वहाँ पे नहीं है. सर दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे बिहार नहीं है. Okay. बाकी 3 चीज़ें हैं सर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और सर 2 मुझे नहीं याद आ रहा है. Okay, okay. तो सर उस इन पैरामीटर्स में सर क्योंकि बिहार नहीं आता है, तो ऑब्वियसली फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ एंड द ये सर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता बिहार को. उसके लिए सर कुछ ऑल्टरनेट अगर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोवाइड किया जाए तो वो किया जा सकता है. So don't you think then the other states would complain about that why Bihar is being given a special treatment? Because Bihar, when it comes to overall revenue sharing, so Bihar contributes 1 rupees, but in return Bihar is getting more than somewhere around 3.5 rupees from center. So Bihar is already getting a disproportionate share because due to a statutory grant that is being offered through finance commission, so Bihar is already getting disproportionately high share. How would you justify it then? सर क्योंकि बिहार अगर सर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे बिहार का रैंक लोवेस्ट है, जैसे पॉवर्टी में बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, या फिर एजुकेशन में बिहार पीछे है. तो अगर फॉर लाइक अभी हमारा विज़न है विकसित भारत का, तो अगर बिहार पीछे रह जाता है तो इससे पूरे इंडिया के जीडीपी प्लस डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. Okay. सर तो उसके लिए बिहार को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. Okay, okay. सर मे बी इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. Okay, means for specifically for the establishment of industry, you want like a special package should be given to Bihar. सर that is one of the parameter on which the government can. Okay, okay, okay. चलो ठीक है.
मुझे ऐसा लगता है शिवानी कि आप अच्छा कर रही हो, यू आर डूइंग ग्रेट। जहाँ पे अभी करना क्या है कि डू नॉट लीव एनी गैप, लाइक सी यू हैव ऑलरेडी डन, मान लो तुमने तुम्हारा प्रपत्र में it must be mentioned कि you want to join BAS is your means in order of preference it is the rank 1, BAS is at rank 2, so you need to prepare more on it. Why BAS? Why do you want to leave this job and shift to BAS? One question. Second question कि बिहार एजुकेशन सर्विस why over say BPS? BPS के ऊपर why are you giving preference to बिहार एजुकेशन सर्विसेज? इसमें ये बोल सकते हैं ना कि मैंने डीएसपी डाला ही नहीं है सिर्फ। वो तो ठीक है, आप जस्टिफाई करना वहां पे कि क्यों, वो आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको अगर बताऊंगा तो सब वही आंसर बोलेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो पर्सनल रीजन है वो तो नहीं बोल सकते, लाइक डीएसपी का जॉब जहाँ तक मुझे लगा अभी तक वो बहुत हेक्टिक होता है। तो हेक्टिक, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हो तो ये कैसे बोल सकती हो कि सर ये चीज नहीं बोल सकते। बिहार एजुकेशन सर्विस को आप इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि सी मैं दिस इज व्हाट आई वुड हैव टैकल्ड इट। बिहार right now it is most backward in terms of when it comes to multidimensional poverty index, when it comes to human development index. So one of the reason behind the backwardness is human capital. Bihar is not having adequate amount of human capital who is required for the progressive development of Bihar. So being a BS, I can bring at least in one particular field associated with human capital. I can directly associate myself with the education field. I know what to do. Wherever I would be posted in my district, I would ensure that कि जो भी schools हैं, they would perform really well. So that the quality of education that would be imparted to the children after a period of time, जब 15 साल down the line, when they would join the workforce, so they contribute towards the development of Bihar. ऐसे करके उसको टैकल करो। ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल हो गया। सेकंड थिंग एक और मैं आ रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल सेकंड बोलिएगा कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, मुझे ऐसा लगा कि वी डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विज़ बॉय चाइल्ड। सो बीइंग अ BS, I can ensure that कि no girl is left out. Girls do not become burden because most of the parents they prefer to send their girl child to government school while the boy child to private school. So that by means giving proper quality, by ensuring proper quality in government school, I can make sure that the girl child also receive the better or the best quality of education. बहुत सारे आप आर्गुमेंट्स यहाँ पे बना सकती हो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूछो और क्या तुम्हारा डाउट है। सर कास्ट सेंसस में जो आपने पूछा, ये सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, हाँ? क्या बोल सकते? अभी सुनो, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इधर देखो मुझे। बहुत सारे लॉज हैं, तुम ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हो, बहुत सारे लॉज हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ SC ST, तो क्या मिसयूज नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मिसयूज होने का मतलब क्या है कि लॉज को हटा दें? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। कास्ट सेंसस शुड बी देयर, वी रिक्वायर इट। Of course, this is going to generate caste consciousness. This is going to cause caste tension, caste polarization. But at the end of the day, we have to equip society. We have to educate them to the level so that this do not create a caste tension. Rather, it becomes a basis for proper development of the society. बोलिएगा कि caste census is one of the tool. Right now, government is offering multiple schemes. मैंने बोलिएगा कि block welfare officer रहते हुए, sir, I have seen multiple schemes which are for SC ST, but those schemes do not make a distinction between creamy layer SC and non creamy layer SCs. So जब data अपने पास रहेगा, so I can target those schemes, I can properly identify more vulnerable among them, and those marginalized people could be targeted so that ultimately their empowerment happen. तुम यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकती हो, जी रोहिणी कमीशन का नाम सुनियो। What is जी रोहिणी कमीशन? Go ahead. सर ये ओबीसी से रिलेटेड क्या है? अभी देखो, जी रोहिणी कमीशन का काम क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बनाना है और उस ओबीसी लिस्ट में ये आइडेंटिफाई करना है कि बैकवर्ड क्लास में बैकवर्डनेस किस किस लेवल का है। ठीक है, तो जी रोहिणी का भी ये आपको
अब बताना है कि अगर जी रोहिणी कमीशन नहीं आता तो वी वुड नॉट हैव कम टू नो कि नियरली देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैकवर्ड कास्ट हु हैव नेवर गॉटन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एट ऑल। सर ये क्रीमी लेयर नहीं नहीं नहीं, क्रीमी लेयर का अलग कॉन्सेप्ट है। विद इन एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में जी रोहिणी कमीशन ने कुछ कास्ट को आइडेंटिफाई किया है कि पिछले 34 साल में उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। तो अगर जी रोहिणी कमीशन नहीं आता तो वी वुड नॉट हैव कम टू नो। इन द सेम वे अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो वी वुड नॉट कम टू नो दैट विद इन बैकवर्ड कास्ट हु आर द मोस्ट वल्नरेबल, हु आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। समझ में आया? यस सर। कर लोगी टैकल? अब बताओ। और सर ये आर्टिकल 341 में जो 341 क्या है पहले ये समझो। 341 clause 1 says that the president has the power to bring the official list of SCs। उसमें एडिशन एंड डिलीशन 341 clause 2 जब पढ़ोगी तो उसमें एडिशन एंड डिलीशन दैट पावर हैज बीन गिवन ओनली टू पार्लियामेंट, अ स्टेट कैन नॉट डू सो। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जब पूछ रही हो तो बता रहा हूं, देख लो एक बार। ईवी चिनैया केस एक आया था। ईवी चिनैया केस का नाम सुनियो? यस सर। ये केस 2003-4 का है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अ स्टेट कैन नॉट डू सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एंड एसटी because SCs are homogeneous communities and that would amount to tinkering with the list। अब मामला देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहला ये वाला जो आर्गुमेंट है उसको खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला SCs आर नॉट होमोजीनियस कैटेगरी। विद इन SC देयर आर मोर बैकवर्ड SC, कुछ जो SCs में है दे आर मोर फॉरवर्ड SCs। सो अ स्टेट शुड बी अलाउड टू डू सब कैटेगराइजेशन। एक तो ये बोला। सेकेंड क्वेश्चन उठा कि डज सब कैटेगराइजेशन बाय अ स्टेट अमाउंट टू टिंकरिंग ऑफ विथ आर्टिकल 341 एंड 42? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अ स्टेट इज नॉट एडिंग एनी न्यू कास्ट टू द लिस्ट। अ स्टेट तो जो लिस्ट दिया हुआ है उसी को सब कैटेगराइज कर रही है। सो इट डज नॉट अमाउंट टू टिंकरिंग विद द लिस्ट गिवन अंडर आर्टिकल 341, 42। कोई दिक्कत? कर लोगी? टेलीग्राम ग्रुप पे हो? नो सर। तो टेलीग्राम ग्रुप पे रहना। जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शन, ऐसे तुम्हारा है कब इंटरव्यू? 23 को। टाइम कम है तो अभी तुम आगे प्रिपेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कुछ ऐसा तुम लोगों के लिए डाला है टॉपिक्स, ठीक है? प्रिपेयर करो। कोई भी इश्यूज होता है टॉक टू मी डायरेक्टली, मैं अवेलेबल हूं। जो बच्चों का जल्दी है उनके लिए ज्यादा ही ये हूं। कोई अभी तुम्हें लगा यहां से कुछ बेनिफिट हुआ? यस सर, सब बहुत सारी चीजों में। अभी जो और मॉक की थी उससे थोड़ा डिफरेंट था, ये जरूरी था। सही। यस सर। गैप्स जो हैं वो फिल होंगे इससे। तो अभी यही करना है। यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द गैप्स। तुम्हें पता था अगर बिहार एजुकेशन सर्विस पे क्वेश्चन होता तो अटकने वाली थी। यस सर। तो वो सब अब हो चुका है। इसके अलावा करना क्या है, अभी से जाओगी घर पे। ऐसा जो भी प्रपत्र से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तुम्हारे घर पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है अदर देन तुम्हारा सैलरी? सर भैया का जॉब है। भैया व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ? सर ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन चंडीगढ़। ओके, योर ब्रदर इज मैकेनिकल इंजीनियर। भैया से पहले कैसे घर का खर्च हो रहा था व्हेन पापा वाज नॉट देयर? सर पापा का घर था तो रेंट आ जाता था, प्लस मेरी जॉइंट फैमिली है तो। ओके, मींस योर फैमिली वाज टेकिंग केयर ऑफ यू। अंकल आंटी दे वर टेकिंग केयर ऑफ। गुड। चलो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं चाह रहा था कि एग्रीकल्चर से कहीं से कोई रिलेशन है? बिजनेस था सर। बिजनेस क्या का है? था सर, पापा का था। अपने क्या का? ग्रोसरीज किराने का बिजनेस। ओके। ठीक है। कुछ पूछना है तुम्हें शिवानी? नो सर, अभी तो इतना भी काम करना पड़ेगा सर। मुझे आई थिंक मेरे पास चीज़ों का सुपरफिशियल नॉलेज है, ऊपर पढ़ लिया है, डीप में कोई बात नहीं। तुम तब भी, मैं जितने बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ ना तो उसमें तुम अच्छा कर रही हो, डोंट वरी। मैं अगर तुम्हारा रियल में इंटरव्यू करता रहता तो आज भी इतना ग्रिलिंग के बाद भी आई वुड हैव इजीली गिवन 80 टू यू। सो डोंट वरी, अच्छा कर रही हो, ठीक है? कर लोगी, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी इशू हो जस्ट टेक्स्ट मी। वहां पे अपना नाम और डेट लिखना है इंटरव्यू का, तब मुझे, क्योंकि बहुत बच्चों से डील कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है? तो मुझे वापस जाना है जहाँ मेरी पोस्टिंग है। ओके, कब जाना है? कल ही वापस जाना है। और फिर इंटरव्यू वाले दिन आओगी? इंटरव्यू के एक दिन पहले। तो क्या क्या चाहिए बताओ?
कुछ नहीं सर, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है। तो नहीं, तुम्हें कोई भी इशू रहेगा, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप मैसेज कीजिएगा, आई विल टॉक टू यू। यस सर। ठीक है? यस कुछ और पूछना है? सर, ये सेट ले जा सकते? ये वाला? हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकती हो, तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।